Hello students, we are going to start a very important theorem of this rotational dynamics, which is parallel axis theorem. Okay, very important. Its application you will study later on in my next lecture. Okay, so let's understand what is the theorem. I have written it on the board. So before going for the statement, try to understand this diagram. This is a rigid body, okay, and here is its center of mass. This is the axis passing through center of mass, and here there is one point at any distance from this center. But these two lines, axes, are parallel to each other. Has a formula which is IO is equal to IC plus MH square. Okay. Now let me tell you the terms. You know it is moment of inertia. So moment of inertia about any axis other than center of mass. Yeah. This is moment of inertia about the axis passing through center of mass. Yeah. Okay. This is the total mass of the object, and h is the distance, okay, between these two parallel axes. Got this? अब यही जो फॉर्मूला है उसी को हम लोग ने स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया है. ओके, नाउ आई रीड द स्टेटमेंट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस, मतलब आई ओ हो गया, ठीक है, is sum of means addition, okay, moment of inertia about an axis parallel to given axis and passing through center of mass. So I hope you understood. इससे ये एक्सिस से पैरेलल होना चाहिए एंड सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए. तो ये हो गया आपका IC. ओके, उसका एडिशन किसके साथ करना है? विद द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस. दैट इज मास आ गया मतलब m एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मतलब h. ओके, सो इसका और इसका एडिशन करना है, सम, तो आपको मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस. सो इट इज क्वाइट इजी. सिर्फ फॉर्मूला को याद रखो, उसी को कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट में. ओके, सो आई रिपीट वन मोर टाइम. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस is equal to sum of moment of inertia about an axis which is parallel to this axis and passing through center of mass, and product of what? Mass of the object square of the perpendicular distance between that two axes. Got this? Now the thing is we are supposed to prove this. Here हमको prove भी करने का है. Okay, so moment of inertia we have already studied. It is nothing but mass into square of distance from the axis. I hope you understood that. Previous lecture में हमने already सीखा हुआ है moment of inertia का formula होता है mass into r square. R is not the radius, it is the distance. Okay, so what we are assuming, इधर एक छोटा सा very small mass we are assuming, elemental mass, जिसको हम dm से denote करते हैं. ओके, सो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का है अबाउट दिस एक्सिस IC, सो व्हाट आई विल राइट ओवर हियर? आई विल राइट IC. ठीक है, मास का वैल्यू क्या है? dm. सो आई विल राइट dm. गॉट दिस? एंड उसका डिस्टेंस लगेगा मुझे ये पॉइंट से, C पॉइंट से एक्सिस से. सो लेट्स से दिस इज दैट डिस्टेंस. सो दिस डिस्टेंस विल बी रिटन एज BC स्क्वायर. ओके, मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. बट ये मुझे सिर्फ एलिमेंटल मास का देगा, मुझे तो पूरे बॉडी का चाहिए. तो पूरे बॉडी का चाहिए तो मुझे ये सारे मासेस जो भी ऐसे छोटे छोटे प्रेजेंट होंगे वो सबको ज्वाइन करना पड़ेगा. ओके, ज्वाइन करना है मतलब समेशन आ गया. समेशन दैट इज ऑलमोस्ट लाइक इंटीग्रेशन. ओके, सो इफ आई इंटीग्रेट दिस then I will get the total moment of inertia of this object about IC, about center of mass. ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस फाइंड करना है तो व्हाट आई विल डू? IO विल बी इक्वल टू, समझ जाओ, इंटीग्रेशन आएगा. बट दिस डिस्टेंस क्या है इसका? वो एक्सिस से इट इज इक्वल टू DO स्क्वायर एंड मास वैल्यू इज dm. एंड ये इंटीग्रेट dm को करेगा सो दैट टोटल मास इज गेटिंग. Got this? So this is how we get two formulas.
अब हमको क्या करना है, इसको थोड़ा आगे सॉल्व करना है. लेट्स कम टू दिस पार्ट. IO will be equal to, अब जरा ऑब्जर्व करो, ये DO को पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इन दिस ट्राइंगल OND, उसमें अप्लाई करो. So instead of DO square, I can write ON square plus ND square. ON square plus ND square into DN. Got this? Now next part is ON को observe करो. It is made up of two parts, OC as well as CN. So I can write my next step as OC plus CN the whole square plus ND the whole square, and this is DN. Got this? Now the next part is हमको इधर A plus B the whole square का फॉर्मूला अप्लाई करना है. So my next step will be OC square plus 2OC CN plus CN square plus ND square, and this is whole bracket, and here we have DN. Now let's move on to the next part. अभी जरा ऑब्जर्व करो, CN square ये रहा, ओके, ND square ये रहा. So अभी ये छोटे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करो. CN square plus ND square. I hope it will give you this hypotenuse square, which is equal to CD square. So my next step will be integration OC square plus 2OC CN plus this will give me CD square, and this is DM. I hope this much is clear. Now our next step will be, we are supposed to multiply DM with each term. Okay, so I will not write one more step. I hope it is easily understood that DM is multiplied with each and every term. So fine, let me write it again. OC square DM, okay, plus integration of 2OC CN into DM plus integration of CD square into DM. ठीक है, DM को मैंने हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया. Now the interesting part comes. देखो, OC square. I hope I can write this as H. Okay, so यहाँ पर देखो OC के बदले मैंने H लिख दिया. So this will give me H square. ठीक है. Then here also H will come. Okay, CN it's not denoted by anything. Let it be as it is. CD square DM. अब जरा observe करो. CD square DM with integration. So instead of making changes over here, मैं next step में ही changes करता हूँ. So this will be written as H square integration of DM plus 2H CN DM plus this has become value of IC. Okay, this is IC. Now check this part. Integration of DM मतलब क्या? सब मास को ऐड करना है. Okay, so that will give you total mass, which will be equal to M. This will be H square plus IC plus this part 2H CN DM, and left में क्या चल रहा है कब से? IO. Okay, now the actually your derivation has come up. IO equal to IC plus MH square. आंसर आ गया. But what about this part? ये पार्ट का क्या करने का है? So this is a concept related to center of mass in your 11th standard. Center of mass का एक definition है that when you take moments about center of mass, it always comes out as zero. Algebraic sum of moment about center of mass for all the masses comes out as zero. अब वो कैसे होता है? याद करो 11th standard में. Here let's say there is one mass. Here there is another mass. तो इसका मोमेंट अगर आप C पे लोगे, so it will go like anti-clockwise. ठीक है, तो पॉजिटिव लोगे. इधर का मोमेंट लोगे, it will come as clockwise. Okay, so anti-clockwise मोमेंट पॉजिटिव, clockwise मोमेंट नेगेटिव. वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. So ultimately answer will come as zero. Similarly अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कोई मास इधर है, दूसरा इधर होगा, तो ये anti-clockwise, ये clockwise. So ultimately it will cancel out. So answer comes as zero. So this term becomes zero, and that is how you get your final answer as
IO is equal to IC plus MH square. This is how parallel axis theorem is proved. Let's start second important axis theorem, which is perpendicular axis theorem. Now once you are done with parallel axis theorem, perpendicular axis theorem तो बहुत इजी है, डेरिवेशन एकदम सिंपल लगेगा, सिर्फ स्टेटमेंट को समझो एंड उसका फॉर्मूला समझो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फॉर्मूला लिखता हूँ. इट इज IZ is equal to IX plus IY. So इसे क्या समझ में आता है? Moment of inertia about Z axis is sum of moment of inertia about X axis and moment of inertia about Y axis. ठीक है, इतना सिंपल है. ओके, नाउ स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. इसमें थोड़े टर्म्स दिए हुए कि Z एक्सिस कैसा है, परपेंडिकुलर है, X एंड Y एक्सिस कैसा है, इट इज इन द प्लेन ऑफ द लैमिनार ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये सब इंग्रेडिएंट्स हमको स्टेटमेंट में डालना है. ओके, अदरवाइज सिंपल मीनिंग तो एकदम क्लियर है. Z is equal to X plus Y. ठीक है, now let's try to understand what is a laminar object. Okay, यहाँ पर लिखा है laminar object. So laminar object is an object like a coin. Okay, so coin आप समझ जाओ, it is flat. ठीक है, flat रहता है, चपटा रहता है. So such type of objects can be called as laminar objects. Sphere को आप laminar object नहीं बोल सकते क्योंकि sphere 3 dimensions में फैला हुआ है equally. Okay, whereas coin का example लोगे, ठीक है, तो it is there in X and Y. Okay, thickness भी कम रहता है. So such type of laminar objects होगा तो हम perpendicular axis theorem apply कर सकते हैं. So what is written? Moment of inertia, that is IZ, of which object? Laminar object, about an axis, obviously Z. ठीक है, Z का ही फाइंड कर रहे हैं. अब वो एक्सिस कैसा है? Perpendicular to its plane. ठीक है, so ये वो laminar object है, flat है, उसको ये एक्सिस perpendicular है. कॉइन है समझ लो मेरे पास इधर. ओके, लाइक दिस लाइन, तो उसको ऐसा बाहर निकला हुआ जो एक्सिस है, दैट विल बी कॉल्ड एज Z एक्सिस, perpendicular to the plane of laminar object. Then it is equal to the sum of किसका moment of inertia about two mutually perpendicular axis X and Y. So ये रहा अपना Y axis, ये रहा अपना X axis. तो अगर Z ऐसे बाहर निकला है तो X और Y तो यहीं पर होगा. ठीक है, so वो कॉइन के प्लेन में ही हुआ. ओके, सो दिस टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस आर इन इट्स प्लेन. किसके प्लेन में? लैमिनार ऑब्जेक्ट के प्लेन में. ओके, एंड लास्ट इज ऑल थ्री एक्सिस बीइंग कॉन्करेंट. कॉन्करेंट का मीनिंग ये है कि एक ही पॉइंट से इनिशिएट होता है. दे मीट एट द सिंगल पॉइंट. यहां पर चेक कर लो, पॉइंट O, यहां से Y भी है, Z भी है, X भी है. सो इट इज कॉन्करेंट पॉइंट. I hope you understood this. So statement भी काफी easy है. Moment of inertia about an axis which is perpendicular to this laminar object, it is equal to sum of moment of inertia of two axes which are mutually perpendicular to each other and in the plane of laminar object, and all three axes are concurrent. ठीक है, ये हुआ इसका statement. Now हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. सो यहाँ P पॉइंट पे एक मास अज्यूम किया है हम लोग ने, व्हिच इज नथिंग बट dm. सो मैंने यहाँ dm लिख दिया. हम लोग z एक्सिस से फाइंड कर रहे हैं तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए. ठीक है, z एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए ये मास का, व्हिच इज डिनोटेड बाय z. सो यहाँ पर आ जाएगा z स्क्वायर एंड हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा because this is a very small elemental mass. ठीक है, तो टोटल मास चाहिए तो इंटीग्रेशन. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं Ix फाइंड कर रहा हूं, if I am finding Ix, so I will write mass as dm. अब x axis से डिस्टेंस कितना है dm का? I hope you can see I have written y over here. This is y. So यहाँ पर आ जाएगा y square इंटीग्रेशन. Similarly, if I want to find Iy, तो y एक्सिस से ये मास का डिस्टेंस कितना है? I have written over here it is x. So आ जाएगा x square dm. ठीक है, now observe this triangle ONP. ठीक है, this is a right angle triangle. Okay, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है. So if this is y, then this will also be y because ये तो एक रेक्टेंगल शेप है. y y x x. हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट है in triangle ONP.
पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो. So I can write y square is equal to, y square plus x square is equal to this hypotenuse square which is z square. Got this? Now हम क्या करेंगे, पूरे टर्म को dm से मल्टीप्लाई कर दो. So this will give you y square dm plus x square dm is equal to z square dm. Now our next step will be पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो. ओके, सो यहाँ इंटीग्रेशन आ गया, इधर भी इंटीग्रेशन आ गया, इधर भी इंटीग्रेशन आ गया. इट इज वेरी सिंपल. ये टर्म हो गया आपका iz, so I can write iz is equal to, this has become your iy plus this has become your ix. So that is how iz equal to ix plus iy, and that is how the perpendicular axis theorem is proved.